हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मधुबनी या मिथिला पेंटिंग पिकॉक की कंप्लीट डिज़ाइन। उसके लिए मैंने लिया है एक स्क्वायर शेप का पेपर, स्केल, मार्कर, स्केच पेन, एक्रेलिक पेंट और ब्रश। सबसे पहले हम बॉर्डर का फ्रेम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे, बीच में मोर का डिज़ाइन बनाएंगे।
हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब पिकॉक बनाएंगे। पिकॉक बनाने के लिए मैं 8 सेंटीमीटर का सर्कल बना रही हूँ और ये जो स्क्वायर शेप का पेपर है वो मैं 28 सेंटीमीटर का ली हूँ। पिकॉक बनाने के बाद हम चारों साइड लोटस का डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, अब कलर करेंगे।
hope you will like it and this video will helpful for you. Thank you for watching. If you like my work, don't forget to subscribe my channel. Friends, you can suggest me which kind of video and tutorial you like to watch.